बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फ़िलहाल का सफ़र तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग मल्टी क्लास या मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें हम बजाय बाइनरी के सिर्फ दो क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करने के विल सी हाउ वी कैन यूज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर क्लासिफाइंग अमंगस्ट मल्टीपल क्लासेस। तो ये टॉपिक हम इससे पहले और कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए आए हैं, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब हम इसको देखेंगे तो ना सिर्फ इससे हमारा मकसद खाली इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन करना होगा, बल्कि एक जनरली एक तरीका सीखना होगा कि कोई भी बाइनरी क्लासीफायर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लासीफाइंग अमंगस्ट आर सी नंबर ऑफ क्लासेस और एन नंबर ऑफ क्लासेस। सो लेट्स बिगिन। जस्ट वेरी क्विकली रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट कि हमारा मतलब क्या है जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। जो कुछ अभी तक हम देखते हुए आए हैं, वी हैव सीन दैट व्हेनेवर वी हैव टू क्लासेस एंड एनी नंबर ऑफ फीचर डिमेंशंस, हम इस क्लासिफिकेशन को बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। और हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर गोल ये था कि हम किसी तरह से एक लाइन फिट कर सकें इसके बीच में, जो लाइन लीनियरली सेपरेट कर दे हमारे एक क्लास को दूसरी क्लास से। ठीक है, इन जनरल आप एक हाइपरप्लेन फिट कर रहे थे जो कि लीनियर सेपरेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। सो इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, इट कुड बी एनी वन ऑफ these hyperplanes that is separating between your two classes. अभी तक हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे थे बाइनरी क्लासिफिकेशन को, एंड इट वाज अ वन ऑफ क्लासिफिकेशन। सो कोई भी आने वाली ट्रेनिंग एग्जाम्पल या एक क्लास से बिलोंग करेगी या दूसरी क्लास से बिलोंग करेगी, दोनों से बिलोंग नहीं कर सकती। When we say multi-class या multinomial classification, what we mean is that now we have more than two classes and we want to train a model, a classifier to differentiate between these classes. यहाँ पर भी हमारा again मतलब यही होता है कि our example, our instance belongs to just one of these C classes. So in this case, C is equal to थ्री क्लासेस हैं और हमारा जो आने वाला कोई भी एक इंस्टेंस है वो इन तीन में से किसी के अंदर मैप होगा। सो द वे what we essentially we want at this point is that we want to somehow create linear separation between all of these classes. Somehow we want to separate out all of these classes. अब ये किस तरह से सेपरेशन करनी है, कैन वी यूज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर दिस, अगर हम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, दैट्स द टॉपिक ऑफ द करंट वीडियो। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर जहन में रहे कि जब मैं मल्टीनोमियल या मल्टी क्लास कह रहा हूँ तो इस क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब मल्टी लेबल नहीं है। यहाँ पे इससे मतलब मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। सो दैट्स समथिंग एल्स। सो मल्टी लेबल आप इससे पहले देख चुके हैं। मल्टी लेबल वो क्लासिफिकेशन होती है वेयर ईच टेस्ट इंस्टेंस could belong to any subset of your classes. So it could belong to one class, two classes, three classes, up to n classes. सब की सब classes से belong कर सकती है with varying levels of probabilities. Like for example, emotion के case में, if there is a photograph and I want to assign it one of six emotions or like of a subset of six emotions, I can assign it one emotion. Let's say the person in the picture is angry, or they're angry and surprised, or they're angry and sad and surprised, and so on and so forth. So that's an example of a multi-label classification, जो कि again वहाँ पे मल्टीपल लेबल्स, मल्टीपल क्लासेस तो हैं, लेकिन एक ही इंस्टेंस को मल्टीपल लेबल्स मिल सकते हैं। व्हेन वी से मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इन जनरल, वी यूजुअली मीन, सो मल्टी क्लास के केस में जनरली एंड मल्टीनोमियल डेफिनेटली वी मीन कि हमारा जो इंस्टेंस है, आने वाला टेस्ट इंस्टेंस है, वो सिर्फ वन एंड ओनली वन ऑफ दी सी क्लासेस को बिलोंग करता है, वो एक से ज़्यादा को बिलोंग नहीं कर सकता। लाइक यू हैव फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, रैबिट्स. One photograph cannot be both a cat and a dog or a cat and a rabbit. It's either one or the other, or like one of those C classes. ठीक है, I hope this is clear. Now the main problem at this point is that our logistic regression, as you have seen based on the very definition of it, it fits a hyperplane between your two classes. So it's inherently a binary classifier.
It inherently models binary classification, and therefore if you want to use logistic regression for doing multi-class classification, you need to come up with some other strategies on top of it. Like, you're not changing the core of the algorithm, core of the model, you're creating strategies on top of it, to allow it to perform multi-class classification. So that also means कि इसके अलावा भी जो ऐसे मॉडल्स हमारे पास होंगे जो कि बाइनरी क्लासिफायर्स हैं अपनी ओरिजिन में, अपनी ओरिजिनलिटी में, ये टेक्निक्स जो हम सीखेंगे ये उनके लिए भी यूज़ हो सकती हैं और उनको भी मल्टी क्लास क्लासीफायर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं. सो हमारा ये बुनियादी प्रेमिस यहाँ पर ये है कि वी कैन कन्वर्ट एनी बाइनरी क्लासीफायर इनटू अ मल्टी क्लास क्लासीफायर बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स. So multi-class classification से मतलब हमारा again ये है कि multiple class labels are present in the data set. So the two techniques that we're going to look at for performing multi-class classification using binary classifiers, the first one is what we call one versus rest or one versus all, या इसको one against all भी कहते हैं. So इसको OVR या OVA या AA ये सारी टर्म्स इसके लिए लिखी जाती हैं. So one against all, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, one against all. So ये सब नाम इसके लिए यूज होते हैं. So essentially what this means is that you split a multi-class classification into one binary classification problem per class. So instead of doing like directly a multi-class classification, for example मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास photographs हैं cats, dogs या horses की. So अगर मैं इसके बीच में क्लासीफायर ट्रेन करना चाह रहा हूँ जो किसी भी आने वाले इंस्टेंस को कैट, डॉग या हॉर्स में डिवाइड कर दे, क्लासीफाई कर दे, तो मैं इसकी जगह सवाल ये पूछूंगा कि ओके, आई हैव अ क्लासीफायर विच क्लासीफाइज बिटवीन अ हॉर्स एंड नॉट अ हॉर्स, another classifier which classifies between a dog and not a dog, and another classifier which classifies between a cat and not a cat. And now I'm going to use these three classifiers together and then figure out कि हमारे इन तीनों classifier से scores क्या आते हैं, और जो classifier maximum score हमें return करेगा मैं वो assign कर दूंगा label इस particular class को. So in other words, I have converted this into three questions. Is this a horse? Is this a cat? Is this a dog? और इन तीनों के जवाब में I'm getting a probability value. So P1, P2 and P3. So let's say I'm getting these three scores या these three probabilities. मैं अभी general रखता हूँ, मैं इसको score भी कह देता हूँ. I'm just getting these three scores. So whichever one, horse, cat या dog, gives me the highest score, whichever classifier gives me the highest score, I'm just going to say, okay, that's the label that should be assigned to this class. So that way we can use three, in this case three, or in general case for n classes, n binary classifier models to train a multi-class classifier. ठीक है, ये पहली टेक्निक है. अभी इसकी और तफसील देखते हैं. The second technique is what we call the one versus one classifier. So the one versus one classifier splits a multi-class classification into one binary classification problem per each pair of classes. So now हम rather than saying कि हम जो है वो वन वर्सेस बाकी सब करेंगे, यानी या वो कैट है या कैट नहीं है, या वो डॉग है या वो डॉग नहीं है, या वो हॉर्स है या वो हॉर्स नहीं है. Now we're going to say, okay, there should be a classifier between cat and dog, between cat and horse, between dog and horse, between dog and cat. So now we are basically सारी की सारी जो हमारी परम्यूटेशंस हैं, सारे के सब जो इनफैक्ट जो कम्बिनेशंस हैं, उनके लिए हम एक एक बाइनरी क्लासीफायर ट्रेन कर लेते हैं. सो n choose 2 आपके पास पेयर्स बन सकते हैं, उतने ही हम बाइनरी क्लासीफायर मॉडल्स यहाँ पर बनाएंगे, एंड देन वी जस्ट गोइंग टू सिंपली आइदर वोट, हम वोट कर लेंगे उनके बीच में कि सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या लेबल आ रहा है इसके लिए, वो लेबल इसको असाइन कर देंगे, या फिर हम इसमें एक सम ऑफ स्कोर्स का मेथड है, वो भी अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि वो भी यूज़ किया जा सकता है टू फिगर आउट द आउटकम ऑफ दिस क्लासीफायर. सो ये आपके पास अब दो चीज़ें जो हैं, सो आपके पास आ गई. इस वाले में आपने क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, मैं ऊपर वाली चीज़ की तरह अगर लिख दूँ, इज़ दिस अ कैट और अ डॉग, is this a
horse or a dog? Is this a cat or a horse? ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? Cat, dog, cat, horse, dog, cat, dog, horse. I think we're done with all. So इस केस में ये 3 बनेंगे. If I've yeah, I think but if you just do the choose as well, you find that it is 3 multiplied by 2 divided by 2, which is 3, right? So ये 3 आपके पास cases बन जाएंगे 1 versus 1 के. So I hope you're getting the picture how you can use a binary classifier for doing multi-class classification. अच्छा जनाब, अब हम ज़रा इसकी और तफसील में चले जाते हैं. सो वन वर्सेस ऑल के अंदर यू आर ट्रेनिंग वन क्लासीफायर पर क्लास. सो x बिलोंग्स टू द क्लास i वर्सेस x डज नॉट बिलोंग टू द क्लास i फॉर ऑल n classes. ठीक है. सो इन द स्कोरिंग फेज ऑल ऑफ द n classifiers predict the probability of each class and the class with the highest probability is selected. ठीक हो गया. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं these green, red and blue. ये 3 आपके पास examples आपको नजर आ रही हैं. You convert these into these 3 classifiers. So this classifier, which is green versus red, blue, and then you have this classifier, which is blue versus green, red, and then you have this classifier, which is red versus blue, green. सो ये तीनों क्लासीफायर्स आपने ट्रेन किए हुए हैं. हर आने वाली नई इंस्टेंस को आप इन तीनों में से गुजारते हैं और फिर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट आती है, लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. सो यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, you have the probability of blue, and you have the probability of red. So in other words, इन तीनों में से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है. सो इट्स लाइक आर्ग मैक्स. कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो इसको मैक्सिमाइज करता है. सो विच एवर वन ऑफ दीज इज मैक्स, हम उस आर्ग्यूमेंट को रिटर्न कर देंगे क्योंकि दैट कलर इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ग्रीन, ब्लू या रेड. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. Now, just a little bit, going into a little bit of detail of how you actually go ahead and you do it. आपको अपने ट्रेनिंग सेट के अंदर अपने ट्रेनिंग डेटा में आकर कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी. सो फॉर एग्जांपल हियर यू सी योर ट्रेनिंग डेटा. बाय द वे दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस लिंक. सो हियर यू सी योर मेन डेटा सेट. सो यू हैव लेट्स अज्यूम 3 फीचर्स x1, x2, x3. सो ये 3 आपकी फीचर वैल्यूज हैं और ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं और इनके आगे लेबल्स लगे हुए हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड सो ऑन. Now what you're going to do is you're going to convert this into 3 different training data sets. The first one is from the perspective of green. और यहाँ पर +1 -1 हुआ हुआ, you can easily do it like 1 or 0. So +1 means कि green है, like you see here, and -1 means कि green नहीं है. ठीक है. तो ये आपने green के एंगल से एक अपना डेटा सेट बना लिया, ये आपने ब्लू के एंगल से बना लिया और ये आपने रेड के एंगल से बना लिया. नाउ यू यूज दीज 3 डेटा सेट्स to train 3 classifiers. अब इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि सोचिए कि इन डेटा सेट्स के जो साइजेस होंगे, स्पेशली जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास के साइजेस होंगे, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, इस पे ज़रा गौर करना शुरू कर दें. अच्छा जनाब, and this is the whole pipeline of what's going on. So you have your training data, you create training set for classifier 1 versus all, training set for classifier 2 versus all, training set for classifier k versus all. So सबके लिए आपने training sets बनाए. Then you train your classifier for class 1, for class 2, for class k, and then आपने अब ये probabilities आ रही हैं. So train classifier, so again you have your train classifiers f1, f2, fk, ये सब के सब classifiers हैं. And then for a training for a test instance xt, ये आपको score दे रहा है, probability दे रहा है या score दे रहा है, जो कुछ भी आप यहाँ पर निकाल रहे हैं इसमें से. अगर ये logistic regression है तो ये आपको 0 से 1 के बीच में एक number दे रहा है इन तमाम cases में, which across these all would not be one probability. I hope you can और इस मौजू पर हम वापस आएंगे अगली लेक्चर वीडियो के अंदर कि अगर मैं इन सब को सम करूं, if I sum these, there is no guarantee that these will sum to 1. There is no such guarantee, right? So these are individually, these are, अगर ये पीछे जो हमारा ट्रेनिंग लगी हुई है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ही सब के सब मॉडल्स हैं, तो then it's guaranteed कि each one of them is between 0 and 1, but there is no guarantee that these add up to 1.
ठीक है, ये चीज़ आपको होपफुली समझ आ रही होगी क्योंकि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. दिस F1 एंड F2 एंड Fk ये आपस में इनका कोई डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है. सो दैट मीन्स कि ईच ऑफ दीज इज रिटर्निंग यू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 बट they may not necessarily sum up to 1, but in any case जो भी ये नंबर आपको रिटर्न कर रहे हैं you just do an argmax and you predict the label. So this is the pipeline of the one versus all classifier, and more generally a mechanism for converting a binary classifier into a multi-class classifier. अच्छा जनाब, the other mechanism that we looked at was the one versus one classifier. So for your n classes, we must generate these n choose 2 binary classifier models. Using this classification approach, we split the primary dataset into one dataset for each class versus every other class. So for example, आपके पास ये red, blue or black है, and then you don't have a green, so just think of this this as black, red and blue. So अब इन तीनों के अंदर you can see कि आपको जो classifier train करने पड़ेंगे, एक करना पड़ेगा आपको, and again 3 है तो ये 3 ही इसका बनेगा. इस फॉर्मूला से भी आप करके देख सकते हैं. So you train for red versus black, you train for black versus blue, and you train for red versus blue, and you're done. So you have these three classifiers. इस केस में इन तीन एग्जांपल्स के लिए, इन तीन क्लासेस के लिए you have these three classifiers जो सारे possible pairs के बीच में आपको क्लासीफाई करके आंसर्स रिटर्न कर रहे हैं. So the way you're going to make a decision about the classification of a particular test instance is that हर binary classifier जो है वो एक class label predict कर रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है कि रेड भी दो जगह आया हुआ है और ब्लैक भी दो जगह आया हुआ है और ब्लू भी दो जगह आया हुआ है, राइट. तो अब इन तीन क्लासीफायर्स में से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट जिस क्लास का आ रहा होगा हम उसको असाइन कर देंगे कि ये जो हमारे जो टेस्ट इंस्टेंस है ये उस क्लास से बिलोंग करती है. दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट दिस. You can also do it in a slightly different way. So if the binary classification model predicts a numerical class membership such as a probability, then you can just do an argmax of the sum of the scores. So आपके पास जितने भी, for example, आपके पास इस first classifier से there is a probability of red and there is a probability of black. यहाँ से you have a probability of black and you have a probability of blue, and here you have a probability of red and you have a probability of blue. So ये सब के सब आपके पास probabilities आ गई हैं. And now you can, or I can just say P1, P1, P2, P2, P3, P3. So now you just sum up. So you add up P1 red plus P3 red, and you do your P1 black plus your P2 black, and you do your P2 blue plus your P3 blue, right? So this gives you your total score. I won't call it a probability, I'll just call it a score. So your score of red, your score of black, and your score of blue. And now between these three sums or scores you just take the max. So जो भी red blue या red black या blue जो भी score को maximize कर रहा है आपने उसको उसके argument को ले लिया. So you either return a red or a blue or a black depending on कि इनमें से कौन सा वाला maximum है. So that's another way of making this decision, especially अगर वो first वाले में किसी तरह से आपका tie आ सकता हो तब भी ये चीज़ use हो सकती है, और ये तब भी use हो सकती है when you're just calculating the whole thing from the probabilities rather than just doing a plain voting. And we'll see in the future examples जहाँ पे one would be more preferable over the other for doing a classification. Very quickly, let's go over some of the pros and cons of both of these mechanisms. पहला वाला जो है वो तो बड़ा सादा सा है कि जो one versus rest है, one versus all है, it trains fewer classifiers. So you can see कि वो जो n choose 2 है वो बड़ा तेज़ी से grow करता है. So if you have the number of labels are number of classes are high, then आपका जो n choose 2 है वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा. That means कि
that would also mean कि it would be slower. आपको बहुत ज़्यादा क्लासीफायर रन करने पड़ेंगे हर दफ़ा अपने मॉडल को अपने लेबल को प्रेडिक्ट करने के लिए. So one versus rest के अंदर it's always the number of classifiers is equal to the number of classes. तो लिहाजा it scales linearly, it grows linearly. तो लिहाजा ये इसका एक बेनिफिट है. However, one versus one is less prone to imbalance in data sets. तो for example मैं initially start करता हूँ एक बिल्कुल balanced data set से. Let's say मेरे पास 10 instances हैं class 1 की और 10 instances हैं class 2 की और 10 instances हैं class 3 की. अब इस केस में if I am doing a one versus one तो मैं जो पहला क्लासीफायर ट्रेन कर रहा हूँ लेट्स से C1 C2 और जो दूसरा ट्रेन कर रहा हूँ C2 C3 और तीसरा ट्रेन कर रहा हूँ C1 C3. तीनों केसेस में मैं 10 और 10 के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, 10 और 10 के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, 10 और 10 के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज द डेटा सेट लुक्स परफेक्ट कि इसके में सब में हर एक की मेरे पास 10 एग्जाम्पल्स हैं. हाउएवर एट द सेम टाइम आई कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे वन वर्सेस रेस्ट करने लगूँ तो देन आई विल बी training my first classifier between 10 and 20, the second classifier between 10 and 20, and the third classifier between 10 and 20. So there would be an imbalance, a definite imbalance. If the original dataset was perfectly balanced in terms of the classes, then the one versus rest is sure to have an imbalance amongst the classes. और वो class imbalance जो है that could tilt the results, bias the results in the favor of a particular class. ठीक है ना. तो वो अगरचे हमारे पास जो वो जो नई क्लास बनी है इट्स एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्लास, यानी कि फॉर एग्जांपल C2 C3 से मिलके एक क्लास बन रही है, बट it's bigger as compared to the class here. And then again we are assuming here कि 10 10 10 equal हैं. अगर ये बहुत बड़े numbers हों और इतने equal ना हों तो this imbalance could be really bad. तो ये एक problem है जो हमारे पास one versus rest के अंदर आती है. However, you will see the one versus rest mechanism being used quite a lot. तो इस डिस्कशन के अंदर, इस ब्रीफ डिस्कशन के अंदर what we have learned is that how do you convert a binary classifier into a multi-class classifier by using these meta strategies. यहाँ पर जो टेक्निक हमने सीखी है यही हम आगे जाकर SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के लिए यूज़ करेंगे. यही टेक्निक मल्टी क्लास करने के लिए हम लेट्स से परसेप्ट्रॉन को मल्टी क्लास करने के लिए यूज़ करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो कई हमारे जो बाइनरी क्लासीफायर्स हैं we can convert them into multi class classifiers using the same technique.